Hello children, welcome back to the SST class. I am Mrs. Mona Jajora and today I am going to teach you chapter 9 Forest and Wildlife of India. Children, do you know what is forest? Forest means in Hindi jungle, and wildlife animals who lives in forest. Okay, so let's begin forest and wildlife. First we will see new words in this chapter. Wildlife, animals living and plants growing in their natural environment. Second, sanctuary, a place where birds or animals can live and be protected, especially from being hunted or dangerous conditions. Third, national park. A national park is a large area of land which is protected by the government because of its natural beauty, plants or animals, and which the public can usually visit. जहाँ पर हम लोग visit के लिए जा सकते हैं. Okay? Now content. First, forest means what is the forest? Okay? Second, importance of forest. हमारे लिए forest क्यों ज़रूरी है? Type of forest type means प्रकार. Okay? Fourth, conservation of forest, and fifth, wildlife of India. Now let's move. What is forest? Large area of land covered mainly by trees and small plants like shrub, bushes, creeps and mosses are called forest. The trees and plants in the forest grow on their own. So forests are called natural vegetation also. जो ट्री से, श्रब से, बुशेस से, क्रिप्स एंड मॉजेस वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और वन मीन्स खुद के द्वारा वो ग्रो करते हैं. ओके. इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. वी गेट टिम्बर, वुड पल्प, फायरवुड फ्रॉम फॉरेस्ट विच आर यूज्ड टू मेक हाउसेस, फर्नीचर, पेपर एंड यूज एज फ्यूल. Gum, resin, cork and medicine also come from forest. You can see here this picture, wood and a wood pulp, medicine also. ठीक है. Next, forest help in causing rain and they maintain a balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Atmosphere means होता है वातावरण. I repeat again, forests help in causing rain and they maintain a balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Okay, forest क्या करता है, बैलेंस करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को. किसमें? एटमोस्फियर. एटमोस्फियर मीन्स वातावरण. फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड एंड चेक सॉइल एरोजन. फ्लड मीन्स होता है बाढ़. बाढ़ को भी रोकता है कौन? फॉरेस्ट. ओके. फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल. और फॉरेस्ट के थ्रू क्या होता है, वाइल्ड एनिमल को क्या मिलता है? शेल्टर मिलता है. ठीक है. टाइप ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशंस. इंडियन फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप. फर्स्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकेंड, deciduous or monsoon forest. Third, thorn forest. Fourth, coniferous forest. And 5, tidal forest or mangrove. First we will see evergreen forest. Okay, as the name suggests, the trees in the evergreen forest always remain green. नाम से हमको पता चलता है एवरग्रीन मतलब क्या होता है, हमेशा हरा भरा रहने वाला ट्री. ठीक है. They never shed their leaves completely. The trees are very tall and have a broad canopy at the top which prevent the sunlight to reach the ground. This picture is evergreen forest picture. Okay, बिल्कुल हरा भरा सा दिख रहा है आपको यहाँ पर. Now, the main trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, bamboo and sandalwood. Evergreen forests are found in the hot and wet regions that receive heavy rainfall. क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर हैवी रेनफॉल ज़्यादा होता है. ठीक है. दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द स्लूप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, हिली एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स.
deciduous or monsoon forest. The trees in this forest shed their leaves in summer season. ये जो फॉरेस्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट, इसकी जो लीव्स है वो समर में क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है. टीक, साल एंड सीसम आर इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट. Deciduous forests are found in the southern plateau and along the foothills of Himalayas. You can see here this area. This area is deciduous forest area. Okay. Coniferous forest. Next, the trees in coniferous forest bear cones. They have needle-shaped leaves which protect them from snow. Devdar, fir, birch, pine, spruce or common trees are these forests. These forests are found in the higher slopes of Himalaya and Nilgiri hills. You can see here these trees, na? Devdar, fir, birch, pine and spruce. Okay, and you can see in the map where is the forest is located. Coniferous forest. Okay. Thorn forest. Thorn means होता है कांटा. Okay. Trees in thorn forest have thorn and spines which save loss of water from the leaves. Cactus, babul, kikar, dead palm are common trees and shrubs of this forest. This area. Thorn forests are found in areas which scanty rainfall like Rajasthan and parts of Punjab, Gujarat and Madhya Pradesh. Okay, you can see here thorn forest में क्या लगता है, cactus, kikar. You can see here. Okay. Tidal forest or mangrove. The trees of this forest have breathing roots which come out from the soil and take oxygen from the air. Repeat again, the trees of this forest have breathing roots which come out of the soil and take oxygen from the air. ये जो ट्रीज है ये क्या करते हैं, सॉइल से अपनी जो रूट है उसको बाहर निकालते हैं और क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन को लेते हैं. ठीक है. द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर सुंदरी, क्योरा, नीपा एक्सेट्रा. Tidal forests are found in the deltas of Ganga, Mahanadi and Godavari. You can see in this picture. मैप है, आप इसमें देख सकते हैं. ये डेल्टा है गंगा नदी का, महानदी और गोदावरी डेल्टा. ओके. The delta of Sundarban gets its name from Sundari trees. जो सुंदरबन डेल्टा जो सबसे फेमस है इन असम, वो नाम किससे लिया गया है, सुंदरी ट्री से लिया गया. ओके. Conservation of forest. The government started Van Mahotsav program where school children grow plants on wasteland. In social forestry program, village people grow plants on open lands. You can see sometimes in Jhabwa also, हमारी सिटी में भी गांव वाले कभी कभी वो हाथी पावा की जो पहाड़ी है वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं. ओके. In 1974, villages of Uttarakhand started Chipko movement where they prevented cutting down of trees by putting their arms around the trees. In 1974 की बात हो रही किड्स यहाँ पर. चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इन उत्तराखंड. ओके. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे आप देख सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉर हेल्थी इन्वायरमेंट अ कंट्री मस्ट हैव एट लीस्ट 1/3 of its area under forest. Unfortunately, India has only 1/5 of its total area under forest due to rapid increase in pollution. You can see in this picture 1/3 ये रिक्वायर है. ओके. इतना फॉरेस्ट हमारे इंडिया में होना चाहिए, बट अभी कितना है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, 1/5 है. ओके. सो हमको पॉल्यूशन को रोकने की कोशिश करना चाहिए. वाइल्ड लाइफ. नेक्स्ट टॉपिक, वाइल्ड लाइफ. Wildlife includes animals, birds and insects that live in forest. India has a rich variety of wildlife, but due to mass destruction of forest, many wildlife has become extinct. Our government has set up many national parks and sanctuaries to protect wildlife. You can see here this picture, tiger picture. Okay.
The Royal Bengal tiger, our national animal, is found in the Sundarbans. The horned rhinoceros found in the Kaziranga. Found means होता है सिंग वाला जो rhinoceros है, found in Kaziranga. National park is a protected animals. Rhinos, elephants, hippo and deer are also found in many forests. In the northeastern state, deciduous forests give shelter to animals like leopard, bear and the wild buffalo. Camels are found in the thorn forest. Asiatic lion are found in the Gir forest of Gujarat. Due to a large amount of deforestation and poaching, these animals are losing their natural homes. Poaching means होता है अवैध शिकार करना, जो कि हम इंसान लोग जो जानवरों को अवैध रूप से मारते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है. Hence, it is important for us to conserve both the forest as well as its wildlife. In order to control poaching, the government has declared many areas as wildlife sanctuaries, bird sanctuaries and national park. This picture is tiger picture, okay? Our national animal, Royal Bengal tiger. Now last topic, some well-known national park and wildlife sanctuary in India are Jim Corbett National Park in Uttarakhand, Gir National Park in Gujarat, Kaziranga National Park in Assam, you can see there, Periyar Wildlife Sanctuary in Kerala, downside south, Chilka Bird Sanctuary in Orissa, this way, and last one is Sariska Tiger Reserve in Rajasthan. Okay. Kids, this topic I repeat again. Listen carefully. Wildlife conservations. यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, तो पोचिंग मीन्स क्या होता है, अवैध शिकार जो होता है आजकल एनिमल्स का, स्पेशली डियर्स है एंड टाइगर है, समटाइम्स उसकी स्किन का यूज़ किया जाता है, फॉर फैशन के लिए उसको सेल किया जाता है. सो वो सब हम लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू उसको क्या करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए. आई रिपीट अगेन, ये टॉपिक मैं फिर से रीड कर रही हूँ, ठीक है. द रॉयल बंगाल टाइगर, आवर नेशनल एनिमल, इज फाउंड इन द सुंदरबंस. The horned rhinoceros found in the Kaziranga National Park is a protected animals. Rhino, elephants, hippo and deer are also found in many forests in the northeastern state. Deciduous forests give shelter to animals like leopard, bear and the wild buffalo. Camels are found in the thorn forest. Asiatic lion are found in the Gir forest ऑफ गुजरात. इट इज़ वेरी फेमस. आप कभी भी जाकर गिर गुजरात देख सकते हैं, वो बहुत सुंदर एरिया है. ड्यू टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड पॉचिंग, दिस एनिमल्स आर लूजिंग देयर नेचुरल होम्स. पॉचिंग के थ्रू क्या हो रहा है, ये जो एनिमल्स जिनके अभी मैंने नेम मैंने भी रीड किया है, वो सब क्या हो रहे हैं, अपने नेचुरल होम्स को क्या कर रहे हैं, वो लोग खोते जा रहे हैं, ठीक है. Hence, it is important for us to conserve both the forest as well as its wildlife. In order to control poaching, the government has declared many areas as wildlife sanctuaries, bird sanctuaries and national park. Now, this chapter is end here. We will meet in the next class. Take care.